वाले हैं अभ्यास के बारे में। भारतीय वायुसेना की तरफ से एडीई को कहा गया है कि अभ्यास को इमरजेंसी मोड में बनाया जाए और जल्द से जल्द इन ड्रोन्स की डिलीवरी भारतीय वायुसेना So are these the actual drones that were used? Wait, I doubt they would show footage of that, right? को की जाए। अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर की सभी These are drones that were delivered to the Indian Air Force, though. फोटोग्राफ्स को देखा होगा तो आपने वहां पर बंशी ड्रोन के रैकेज को देखा। USAF aerial target leave in place live munitions if found. There's a phone number. Okay. और इन ड्रोन्स को भारतीय वायुसेना की तरफ से काफी एक्सटेंसिव नंबर में यूज किया गया था। देखिए बंशी और अभ्यास जैसे ड्रोन्स बेसिकली टारगेट ड्रोन्स हैं और इनको कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये काफी हद तक फाइटर जेट। Oh, okay. So I see. So these are meant to these types of drones are meant to for combat practice, right? That's essentially what they're for. That's what they're used for is combat practice. को मिमिक कर सकते हैं रेडार सिग्नेचर्स के तौर पर। यानी कि इस तरीके के ड्रोन्स अगर वहां पर उड़ रहे हैं तो एनिमी रेडार्स को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर फाइटर जेट उड़ रहे हैं और प्रैक्टिकली उनको अपने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स इनके ऊपर लॉन्च करने पड़ेंगे। अब इमेजिन कीजिए कि अगर एनिमी एयर डिफेंस के पास में 6 ऐसे मिसाइल सिस्टम्स हैं जो आ रहे एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और अगर आपकी तरफ से वहां पर 7 अभ्यास या बंशी जैसे ड्रोन्स छोड़ दिए जाते हैं तो नेचुरली एनिमी एयर डिफेंस वहां पर सैचुरेट हो जाता है और ये एक ड्रोन जाकर अपने टारगेट को मार सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये क्लेम किया जाता रहा है कि उन्होंने भारत के 6 एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, लेकिन रियलिटी ये Pakistan's claiming they shot down 6 Indian aircraft and it was all over. It was all over the place, man. It was all over Western media. It was all over Twitter. It was crazy. I was live streaming at the time during the first few days of Operation Sindoor, and yeah, it was like all you saw on Twitter was people parroting they shot down all these Indian jets, and it's just it's crazy. I don't know, and so many people believed it as well. Crazy, man. यह है कि पाकिस्तान को जो लगता है वो सही है। भारतीय सेनाओं की तरफ से पाकिस्तानी एयर डिफेंस को ये चीज फीड की गई थी कि वहां पर भारत के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से लेकर बीवीआर मिसाइल्स तक this is a South Korean variant of it. टारगेट्स के ऊपर चलाई गई थी वो बेसिकली बंशी थे जो रफाल सूट। I never really thought about it before, but yeah, it makes sense that there are these types of drones that are out there, right? That these different countries militaries would use drones to train for combat purposes. It makes sense. Expensive. I'm sure it's very expensive, right? Well, no, they probably don't shoot down the drones in the combat experience, right? I don't know. 30 MKI या मिराज 2000 के सिग्नेचर को मिमिक कर रहे थे। यानी कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से तो ये 6 एयरक्राफ्ट मारे हैं, लेकिन बाद में जब वो कैमरा खोल के बताया गया कि ये आपके साथ में एक छोटा सा प्रैंक हुआ है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स की यहाँ पर बहुत बड़ी किरकिरी हुई है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से एज अ प्रूफ रेडार it's a huge embarrassment on Pakistan. It's a huge embarrassment on people that believe Pakistan. पिक्चर्स का प्रयोग किया गया था और उन्होंने आकर दिखाया। What is this unregistered hypercam up at the top? This screams like ancient YouTube, like 2010 YouTube, unregistered hypercam. That's wild. I don't think I've seen that in probably 10-15 years. था कि यहाँ पर रेडार ब्लिप गायब हो जाता है तो उस हिसाब से पाकिस्तान ने भारत के इन रफाल फाइटर जेट्स को यहाँ पर मारकर गिराया। पाकिस्तान की तरफ से प्रैक्टिकली यहाँ पर वैसा ही प्रूफ देने की कोशिश की गई थी जैसा कि भारत ने पहले F-16 के केस में दिया था। विंग कमांडर अभिनंदन की तरफ से जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 को मारकर गिराया गया था तो वहां पर भारत की तरफ से रेडार इमेजेस रिलीज की गई थी, लेकिन उस समय इक्वेशन में किसी भी तरीके के डिकॉय ड्रोन्स नहीं थे। लेकिन इस बार भारत की तरफ से पहले पाकिस्तान के अंदर डिकॉय ड्रोन्स भेजे गए थे जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स को ऐसा लगा था कि भारत की तरफ से अटैक किया गया। यहाँ पर फॉर्मेशन में कई सारे बंशी ड्रोन्स गए थे जो रफाल से लेकर Su-30 MKI तक और जैगुआर से लेकर मिराज 2000 के सिग्नेचर्स को मिमिक कर रहे थे। इन ड्रोन्स के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अपने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से लेकर बीवीआर मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च किए गए थे और उसके बाद भारत की तरफ से एक्चुअल अटैक किया गया था। अब अनंत कृष्णन को एक्सक्लूसिव तरीके से यह बताया गया है कि भारतीय वायुसेना इमरजेंसी मोड में अभ्यास ड्रोन्स को अक्वायर करने वाली है और ये अभ्यास ड्रोन थोड़े डिफरेंट होंगे। भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले ये यूएवीज वॉरहेड भी कैरी करेंगे और इस वॉरहेड के चलते अब पाकिस्तान को हर एक ड्रोन They're going to be made to carry a warhead? को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा।
यानी कि अगर भारत की तरफ से ये डिकॉय I ड्रोन्स mean, चलाए it जाए, makes sense, right? It does. You can utilize them as a decoy as well as an actual, a bomb, a missile, a drone, suicide drone, I think is what they're called. जाएंगे तो पाकिस्तान को इनके ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स चलानी पड़ेंगी। और अगर पाकिस्तान की तरफ से इन ड्रोन्स के ऊपर किसी भी तरीके की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम नहीं चलाई जाती है, तो ये ड्रोन्स वॉरहेड के साथ में अपने टारगेट के ऊपर जाकर गिरेंगे और उनको ध्वस्त कर देंगे। Yeah, ऐसे में yeah, अभ्यास exactly. एक बहुत ही बेहतरीन एडिशन होने वाला है इंडियन आर्म फोर्सेस के इन्वेंट्री में। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभ्यास से पहले भारत की तरफ से इस तरीके की कोशिश की नहीं गई थी। भारत की तरफ से पहले निशांत ड्रोन बनाए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निशांत उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे जैसा कि भारत की रिक्वायरमेंट थी। यही कारण था कि निशांत को काफी कम नंबर में अक्वायर करके इससे बेहतर वेरिएंट को बनाने का काम शुरू कर दिया गया था, और वो बेहतर वेरिएंट अभ्यास है। वैसे अभ्यास ने अपनी इनिशियल टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है और अब यहाँ पर इसको वॉरहेड के साथ में टेस्ट करने की आवश्यकता है। वैसे अभ्यास ड्रोन के ऊपर जगह मौजूद है जहाँ पर वॉरहेड डिप्लॉय किया जा सकता है, और प्रैक्टिकली डीआरडीओ को एग्जैक्टली इसी स्लॉट में वॉरहेड डालकर इसकी टेस्टिंग करनी है, जिसके बाद Operation began on the 7th of May in the early hours, like I think 1:22 or 1:23 a.m. And India launched Operation Sindoor. You remember the first big shot was at the terrorist camps, and they took out about 12 or 13. Now we are hearing not just 9, and many terrorist perished. But then what did Pakistan say? Well, they said that they had shot down Rafales. How was that possible? Well, even as these hideouts were being taken out, even as these camps were being taken out, India was also running a decoy operation using drones. What were the drones? Two types of drones. Banshee, which is an imported decoy drone used by the IIF to mimic jet radar signatures, and Lakshya, indigenously developed by DRDO's Aeronautical Development Establishment, ADE, a high-speed pilotless target aircraft used to simulate fighters and cruise missiles. What are the specs of Lakshya? Because not much has been talked about Lakshya. Powered by a gas turbine, and it has subsonic speeds of up to 850 kilometers per hour, service ceiling of 9,000 meters, meaning it cannot fly above 9,000 meters, and a range of 150 kilometers. Well, these were launched using zero-length launches. It's like a thing that you pull back and then release, something like that. Launched via zero-length launcher, recoverable via parachute. In other words, if it is you can give it a command to parachute itself, and if it is within your territory, it will land and you can even recover it. So this was the deception mission. Banshee and Lakshya were launched before the actual missile strikes that hit these terrorist hideouts. Their purpose was to trigger Pakistani radars, provoke scramble alerts, and reveal air defense positions. Lakshya simulated flight paths and radar profiles of real jets/missiles. Now, how was the Pakistani response? Lahore/Rawalpindi radars lit up. The Pakistani Air Force scrambled jets and activated HQ-9/SAM, surface to air missile systems. Pakistan claimed it shot down multiple Rafales and Sukhois. Western and Pakistani media echoed those claims, momentarily claiming Indian jets downed. What was the reality check? No manned jets were present. What Pakistan attacked were decoy drones, remote, unarmed, and built for simulation. But then what was the intent? We'll come to that in just a moment. These were the targets, Banshees and Lakshyas. Well, while Pakistan was firing expensive missiles at Phantoms, revealing radar sites and wasting readiness, India's real strikes on terror camps went largely uninterrupted and were more effective. So these guys are concentrating on these decoys while the actual action was happening over the terrorist camps. A showcase of hybrid modern warfare, blending precision, deception, and indigenous technology. So Lakshya is an indigenous solution. It highlights the DRDO's role in providing homegrown capabilities that are cost-effective, reusable, and built for deception. Remember, if you do something homegrown, everything for the missile is sourced from within.
the other countries don't have a way of knowing that you are actually working on a sophisticated missile program. Because usually what used to happen is, even if you had to import some metal, for example, and the other organizations would be watching what is coming into India, they would do the connection of dots and they'll figure out that India is going to do this particular missile, because in order to do that missile, it requires this kind of a metal shield, blah, blah, blah. You get the point. Now, when you do everything from ground up within the country, it is very difficult for outside people to know what it is that India has. Big, big win, in my opinion. It helps India move towards Atmanirbhar Bharat in sophisticated military technology. That is the big deal. The takeaway here is that Pakistan may claim that they downed Rafales, but in reality, they were just hunting down ghosts crafted by India's own technology. Banshee confused them, Lakshya deceived them. India achieved victory without a single jet crossing their borders. This is the big deal. Not a single Indian jet crossed the borders. Strategic warfare without firing real jets. This is what happened to Pakistan. Do you think they learned their lesson? Well, you tell us by way of comments whether they did or not. But now I'm hearing that Pakistan wants the equivalents of F-35, which could be something like JF-35 from China, in exchange for doing whatever it is that the Chinese want them to do.